Okay, good morning, everybody. Now, we will continue our topic of finding centroids for composite areas. In the previous class, we had studied some new concepts of finding the centroids of composite areas. So, I gave you a composite area which was comprised of two squares or two rectangles sitting close to each other. Individual squares have got their individual centroids, and if you name the first area as 1 and the second area as 2, then the individual centroids have their coordinate with respect to a previously assumed coordinate axis system. So the assumption of a coordinate axis system is really important for this. The first thing that you have to do is, before you start your procedure for finding the centroid of composite areas, you have to decide on a location of origin. Once you have located your own origin, then you start about finding the centroid of individual areas of your composite section. So in my overall composite section, I have two areas now. So what I do is, I take this as area number 1 and this as area number 2. Now, first I find the centroid of area number 1, which is nothing but the coordinate of the centroid of area number 1 with respect to your assumed origin. And let us name this as x1 star comma y1 star. So what is x1 star y1 star? This is the location of the centroid of your first area. And similarly, the location of the centroid of your second area with respect to your origin will be given the name of x2 star comma y2 star. And if you want further clarification, what are these x1 star and y1 star, then I will simply tell you that it is this distance. I will redraw the image. So if you want to clarify what is x1 star and y1 star, since I am using the suffix 1 here, that is indicating area number 1. So I go to area number 1, locate its own centroid and find what is the distance of this centroid from the y-axis. This is x1 star. I locate what is the distance of this centroid from the x-axis. This is y1 star. This is nothing new, but simply the finding of coordinates of the centroid of the given area from the origin. Now similarly, x2 star and y2 star will be the same thing found for area number 2. Since now the suffix is 2, x2 star is nothing but the distance of the centroid of the second area from the y-axis. So this is x2 star. And y2 star is the distance of the centroid of the second area from the x-axis. This is y2 star. Now this said and done, once you have identified the two different areas and their locations of their centroids, now the next thing is to find the location of the overall composite section. So our aim was not to find the centroids of individual areas, our aim was to find the centroid of the whole composite section, which by intuition or by the application of pure logic, anybody of you can simply guess as being somewhere around this point. But intuition will not work for complicated areas. You need a methodology. And the methodology that we were studying for finding the centroid of composite areas was the method of moments. And in this regard, I also explained to you in the previous lecture what is the meaning of
the moment of an area, how to find it, and how to use the moment of an area to locate the centroid of a composite section. So in other words, what we did was we have got two areas and two centroids. This is area number 1. It has got its own centroid x1 star y1 star. This is area 2. It has got its own centroid x2 star y2 star. And what we need to do is find the centroid, the common centroid of this whole area, the composite area. So in order to do that, we developed a formula that x bar. Now you have to learn to differentiate between these notations. When I write x1 or x2 star, that means this is the location of centroid of individual areas. And when I simply write x bar, this is locating the centroid of the composite area. So x bar was simply given by a1 into x1 star plus a2 into x2 star whole divided by a1 plus a2. So if you simply carry out this calculation, see, if you have been provided with a figure, then you can automatically get the value of a1 by finding the area of the first area. x1 star has already been located by you, this distance. x2 star has already been located this distance. a2 is the area of the second one, and a1 plus a2 is simply the total area. So all these quantities are known once you learn how to locate the centroid of individual areas. And similarly, the final value of y bar or the centroid, y value centroid of the composite area will be given by a1 y1 star plus a2 y2 star whole divided by a1 plus a2. Now you can simply go on extending this logic of finding the centroid of composite areas if I give you more complicated shapes. So instead of the shape that we discussed in the previous class, if I try to give you an area like this, let us say I draw a rectangle here, and from the, sorry, and let us say from the midpoint I connect a triangle, and on this triangle let us say I draw a semicircle. Now this is my composite area. Actually, the composite area in your examination would be given to you in a form like this. Now the task is up to you to divide this into differentiable, identifiable standard areas. So if somebody wanted to argue, is this a possible scenario or not? Yes, 100% right. Even this can be taken. But which is easier? In this case, how many areas have you divided the complete composite section into? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is not desirable. So in order to do that, whenever you get a composite section, try to break the composite section into as minimum as possible number of areas. So the number of areas has to be minimized. Otherwise, if somebody wanted to argue that can I have more smaller areas and can I get more number of areas? Yes, there is no limit to how much partitioning you can do to your given composite area. But increasing the number of areas is only going to increase your task. So the first thing that you have to remember is divide the given composite area
into as minimum number of parts as possible, and each part should be an identifiable, recognizable standard shape of geometry. For example, if I give you a geometry like this and you want to divide it like this, these are not even semicircles. But if you ask me, each of these areas is a valid geometry, but not a standard recognizable geometry. For example, what is this geometry? Have you seen a geometry like this ever in your life? So you should never divide the composite section into absurd geometries. You should try to divide the given geometry into recognizable standard geometries. By recognizable standard geometries, I mean the geometries of which the centroid is already known to you. For example, if I take this as area number 1, this as area number 2, this as area number 3. This is a rectangle. I know that the centroid of rectangle will be here. This is a triangle. I know, and over that, more convenient for me, it is a right angle triangle. So I already know that the centroid of this will be one third at this height and one third at this height. So I already know the location of my triangle. And similarly, for the semicircle, I know that it will be at a height of, let us say, 4r upon 3 pi. Now these things have to be remembered along this line. This is the meaning of dividing the geometry into standard recognizable parts. And once you have divided it, for example, in the present scenario, you had a division like this. Now this is area 1, area 2, area 3. Again, you identify x1 star, y1 star, x2 star, y2 star, x3 star, and y3 star, because there are three areas now. And what are x1, y1, x2, y2 stars? These are the locations of your centroid with respect to a standard origin. Now where is the origin? In some cases, even the origin has to be selected by you according to your own wish. So the most popular method of selecting the origin, if it is not given in the problem, is to select the bottommost leftmost corner of any given figure. So it is convenient in this present scenario to put the y-axis here and the x-axis here. Since it was not given in the problem, I am selecting it on my own. And how do you do that? In the question paper or in the answer paper, while you answer, you draw this figure, you draw the coordinate axis and put a capital X and capital Y here and put a O mark here to show that this is the origin. And once you have identified x1 star, y1 star, which is these coordinates, then x2 star, y2 star, which are these coordinates, and x3 star, y3 star, which are these coordinates. The individual locations of the centroids of your individual areas. Then simply the overall centroid x value of your composite figure will be given by a1 x1 star plus a2 x2 star
plus A3 x3 star whole divided by A1 plus A2 plus A3. And similarly, you can construct the formula for y bar. In other words, if I have n number of areas in my composite section, then the overall centroid of my composite section can be given by A1 x1 star plus so on till an xn star whole divided by the summation of all the areas. And similarly for y. And in standard mathematical notation, I can convert it as follows. Summation from I equal to 1 to n, I simply write ai xi star whole divided by summation I equal to 1 to n, the summation of all ai. Now this becomes the standard iterative formula for finding x bar. And similarly, for y bar, you can write as summation I equal to 1 to n ai yi star divided by summation I equal to 1 to n, the sum of all areas. So this is the method of moments for finding the overall centroid x bar, y bar of any given composite area. Now we will go ahead and practice with a very small area that was given to you. Some of you have already studied in advance and completed this task. I know that, but I also know that most of you have not attempted anything towards this direction. So we will take up this class to practice a little bit on finding the centroid of composite sections. Let us start with a very simple L section. Let me just create some space for you. I'm having some difficulty with my phone today, so I will go to the PDF writer on the desktop. Okay, so let us see this area. As a composite area, it has been given to you like this, as an L section. Now it is up to you to divide this L section into as many identifiable parts as possible. In the figure, you can see that this is how they have decided to divide the area. On the contrary, if you are interested in dividing the area like this, it is also possible. And again, as I mentioned earlier, if somebody wants to divide it into a lot of small parts, that is also your choice. That can also be done. But this is not desirable. You should not unnecessarily increase the number of areas. So the right way to go about is either you divide the areas into two rectangles like this or into two rectangles like this. So whichever is your choice would give you the same answer. But again, look at the problem. Find the center of gravity of the L-shaped area, but there is no origin mentioned here. Nowhere does it say that you should select the origin as point G, or even if somebody wants to select the origin as point F,
There is nothing wrong, you can do that. You can select the origin as A, you can select it as B, you can select it as C, and even if you want, you can select the origin outside the area. You can simply say that I will place my L figure here, and I want to choose a point of origin which is at a distance of, let us say, from this corner it is at a distance of some random X and Y. You can even do that. But again, which is the most preferable way to go about it? Generally, what people do, or generally what even your RTU examiner in your exams will be expecting you, even if it is not given in the paper, is that you should take the leftmost means this is the leftmost corner, the bottommost, this is the bottommost corner. So the leftmost and bottommost corner becomes point G. So it is expected that you will be selecting point G as the origin. So let us do this. With all this information that is with you, let us go back and try to reconstruct the problem. Now what I will do is, I will go according to what is given in the problem here. I have drawn the areas like this. It's a little bit difficult to draw on the desktop, so you will have to pardon the lack of beauty in the figures that I'm drawing here. No problem, sir. Okay. So this is how we decided to break up the whole section into two areas. Now we are calling this as area number 1 and this as area number 2. The dimensions to the overall L section are given in the problem, but now you have to remodel the dimensions to suit the needs of your two individual areas. For example, this whole length is given as 12 centimeters, but what you need is actually the length of this rectangle as 10 centimeters, and this is 2 centimeters. So basically area number 1, I will simply write here, this is 10 centimeters, this is 2 centimeters. So for area number 1, I know these are the dimensions. Now for area number 2, this whole length is 8 and this width is 2. So I will write 8 and 2. This is the origin. Here goes your y-axis and here goes your x-axis. And now let us put down the parameters. This is actually how you should proceed in your exams also. First of all, put in the value of A1. What is A1? It is the area of this rectangle. This is the first area, right? So that is 10 into 2, that is 20 centimeter square. Now again carrying on with the computations of the first area only. We are talking about this area, and now I want to find out what is the value of x1 star. X1 star means the x coordinate of the centroid of the first area with respect to the origin that you have already selected. 1. That means what will be the location? X1 star. See, you know that for the first area, the centroid is at the center of the first rectangle here. And that means this dot should be at the midpoint of this 2 and it should be at the midpoint of this 10. But we are asking about x1 star. That means how far is this point from the y-axis? This distance is your x1 star. So this, as we know, is the half of 2. So this must be 1 centimeter. And now, what is y1 star? Y1 star means the location or the distance of this first centroid from the x-axis. That means we are talking about this distance now. How much is this? Can you guess? 7 centimeter. Very good. How does it become 7?
you have to take this complete distance. So for this complete distance, सर it is 6 the होगी ना sum of ये? this distance. नहीं 6 कैसे होगी? अभी आप एक बार देखो इसको, ये तो 2 है और ये हाँ कितना है? ये 5 है। 10 10 का ये हाफ वाला। होगा ना 5, हाँ और 5 + 2 7, so this is 7 centimeters. Okay, so for the first area you have all the parameters that are required to go about finding the overall centroid. Now सर, हाँ, सर ये x1 स्टार और x बार में क्या डिफरेंस आया? ये तो डिस्टेंस तो यही है और वो कोऑर्डिनेट भी वही आएगा x बार के भी। नहीं, एक्स बार की जो फॉर्मूला लगेगी ना आपकी, भाई एक्स बार जो है वो कैसा लगेगा? आपके पास दो एरिया हैं, तो ये बनेगा A1 इंटू x1 स्टार। सर फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक तरह से सिमिलर ही तो हुई। जैसे मतलब ये उधर से एक्सिस से मतलब वो लोकेशन है, एक्सिस से डिस्टेंस है। लोकेशन है, लेकिन किसकी है ये भी तो देखो बेटा। x1 स्टार जो है वो सिर्फ पहले एरिया की लोकेशन है, सिर्फ पहले एरिया की। और एक्स बार जो है वो इस पूरे एल सेक्शन की एक्स की लोकेशन है। तो सर एक्स बार पहले एरिया ये की नहीं दोनों हो सकती सेम क्या कैसे वैल्यू? होंगे? ये दोनों सेम कैसे होंगे? आपका A1 अकेला तो सिर्फ ये रेक्टेंगल है, और एक्स बार जो फाइंड कर रहे हो वो इस पूरे एल का पता कर रहे हो। तो नहीं इसका सर, सेंट्रोइड लेकिन और इसका सेंट्रोइड एक कैसे होंगे? इसका सेंट्रोइड तो यहाँ कहीं आएगा और इसका सेंट्रोइड यहाँ आ रहा है। इसका तो अलग आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल कोई सिंगल फिगर दे दे अपने को तो उसका लिए। हाँ बिल्कुल, भाई अगर आपका ओवरऑल फिगर ही सिर्फ एक रेक्टेंगल होता तो इसमें x1 स्टार का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ये समझो आप, भाई x1, ये स्टार वाले फिगर्स अपन क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा हैं। क्योंकि अभी मैंने x1 स्टार लिखा है तो इसका मतलब है कि अब मैं x2 स्टार भी लिखूंगा। समझ रहे हो? हाँ ये है सर। इसका मतलब। तो स्टार का यूसेज ही ये है कि एक से ज्यादा है। अगर आपके प्रॉब्लम में रेक्टेंगल ही सिर्फ एक है, यही आपका पूरा फिगर है, तो इसमें आपको एक्स स्टार बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप सीधे सीधे इसका जो सेंट्रोइड है उसको एक्स बार ही बोलोगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। आपका x1 स्टार y1 स्टार मिल गया है, एंड नाउ वी वांट टू प्रोसीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एरिया। A2 कितना है बताओ? आप लोग फिगर देख रहे हैं? फिगर में देख सर करके सीधे 16 16 यस। Now you have 16 to remember सेंटीमीटर। that this is the area we are talking about, the bottom horizontal rectangle. Okay, so 8 into 2, 16. So this is 16 centimeter square. And what is x2 star? x2 स्टार क्या है बताओ? x2 स्टार का मतलब इस 4 रेक्टेंगल का जो 4। सेंट्रॉइड है उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, एंड दैट एज यू नो इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ दिस 8, 4 4 centimeters. And y2 star 1। is the location of this same point from the x axis. तो वो आपको पता है कि इस 2 का हाफ होगा, that is 1. 1। Now apply the formula for finding x bar of the composite section. Now this x bar represents the centroid of this complete area. This complete area. Okay. So as there are two areas, it will be simply calculated as A1 into x1 star plus A2 into x2 star whole divided by A1 plus A2. Please do the calculations and give me the answer.
This is a very simple calculation now. Your answer should be in centimeters. What is the value of x bar? One centimeter. Hmm. So 2.33. Let us check the answer. X bar is 2.33. Correct answer. Yes, sir. Now similarly, find out the value of y bar. The formula would be very similar to this one. The only thing that you have to do is instead of x1 star and x2 star, you have to replace it with y1 star and y2 star. And these values are also already available with you. So please do the quick calculations and get me the value of y bar for the composite section. 4.33. 4.33. The correct answer is 4.33 centimeters. Okay. So what is the meaning of this? X bar is 2.33, Y bar is 4.33. That means in the composite section that we are having over here, this was selected as the origin and the value of your X bar comma Y bar came out to be 2.33 comma 4.33 centimeters. So that means from the origin, the centroid is somewhere like this. What is the length of this? Let us just check. 8 and 12. Okay. So this overall is 8 centimeters. This overall is 12 centimeters. So 2.33 will lie somewhere around here. And 4.33 will be somewhere around here. So this is the location of your centroid. That means 2.33 from the y side and 4.33 from the x side. This is the meaning of the centroid of a composite area. Now, let us take up a little bit more complicated problem. The second problem I leave to you guys to solve. This you will solve on your own, but I will give you a hint regarding this, some types of areas and how to deal with them. This problem also I leave to you to solve on your own. I will help you in solving this problem, which in our sheet is the most complicated problem. But before going to the most complicated problem of all, let us look at an area which is shaped as a T section. In most cases, when you come across a question of RTU, of finding centroids, you will not be given the location of the origin. And as I told you earlier, the selection of origin will be left completely up to you. सर हाँ, सर वो आपने भी एल शेप वाला बताया था ना, कौन सा वाला? एल शेप वाला बताया था ना भी आपने, हम्म, तो उसमें अपन है ना ऐसे भी तो खींच सकते हैं ना, लाइन सेंटर लाइन जाती है, एक्सिस लाइन आप बताए थे ना।
वो टेढ़ी जाती है। मतलब मैं समझा नहीं आप कैसा क्या कहना चाह रहे हो। सर आपने बताया वो कौन सी लाइन के ऊपर ही होता है सेंट्रोइड, पर अपन को पता नहीं होता कि भाई इस लाइन के ऊपर सेंट्रोइड कहाँ पर है फिक्स, एज इट इज ये नहीं पता होता, वो निकाल रहे थे अपन अभी। जैसे ये एल सेक्शन है आपका। हाँ अब इसमें मेरे को ये पता नहीं है कि एल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, ठीक है। तो ओरिजिन हाँ। ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये जो ओरिजिन से जो लाइन जाएगी यहाँ तक, ये जो हम्म, है सेक्शन का जो मिड पॉइंट है ये साइड में, इस लाइन जो बता रहा ये हूँ वो, ये बोल ये रहे हो नहीं, आप। फिर ये फिर वाला फिर मिड पॉइंट। ये हाँ ये ये वाला। यहाँ से और ओरिजिन, हाँ। तो आप चाहते हो कि इसको ओरिजिन सेलेक्ट करें। नहीं, ओरिजिन से और इसकी लाइन दिख जाएगी ना, तो उसी पे कहीं पर सेंटर्ड आता है, आपने बताया था ना एक बार। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि इसी लाइन पे आपका सेंट्रॉइड आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल सेक्शन ऐसा बना दूं, तो आपको क्या लगता है सेंट्रॉइड कहाँ आएगा? क्या यहाँ आएगा? नहीं आएगा। यहाँ कहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हाँ। इसलिए ऐसा कोई थंब रूल मत बनाओ जिसपे कि 100% गारंटी नहीं हो आंसर की, है ना। जैसे अगर आपका अच्छा। एल सेक्शन बिल्कुल ही यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल है, तो देर इज अ चांस दैट इट माइट कम अलोंग दिस डायगोनल। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। तो इस तरह की स्क्यूड एरियाज आ जाए तो इसलिए आप ऐसा थंब रूल मत बनाओ। और अगर आप ऐसा थंब रूल बनाते भी हो तो इस टेढ़ी लाइन पे किसी चीज को लोकेट करना कितना मुश्किल है। So instead you just go by the simple moment formula। आपको तो वो a1 x1 a2 x2 वाला फॉर्मूला लगाओ। आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली करेक्ट सेंट्रॉइड पे पहुंचा देगा आपको ये, ठीक है। यस सर। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ टी सेक्शन लाइक दिस। इस टी सेक्शन की खासियत क्या है? द फर्स्ट थिंग that comes as an obstruction towards solving the problem is the location of the origin is not given, and the examiner has left it completely to your own volition। यानी कि आपकी चॉइस पे छोड़ दिया है कि जहां मर्जी वहां ले लो आप, तो सेंटर जो सेंटर लेना है, ओरिजिन लेना है। अब कई लड़के क्या करेंगे, भाई सर ने कहा था लेफ्ट मोस्ट बॉटम मोस्ट कॉर्नर, तो लेट अस टेक द लेफ्ट मोस्ट which becomes this, and then the bottommost which becomes this. So some people would have an instinct to select this as the origin, and after that the overall centroid of the composite section is going to come somewhere along here. So your overall x bar and y bar will be this. But let me tell you, if you select this सर as the origin, हाँ बोलो। सर इसको घुमा के भी तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, आपको प्रॉब्लम जैसी दी है वैसे आपको घुमाने की फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अच्छा। सबसे पहला काम आपको याद रखना है, नो टेम्परिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द एरिया गिवन टू यू। जैसा दिया है आपको रखना वैसा ही है। ओरिजिन इस पे कहां लेना है ये आपकी इच्छा है, until and unless the examiner himself has not provided the origin। कई केसेस में तो ओरिजिन वो दे देता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम देखो, इसके अंदर ओरिजिन नहीं दे रखी है। आप दूसरी प्रॉब्लम देखो, सेलेक्ट पॉइंट डी एज द ओरिजिन, इसमें दे दिया है, तो अब इसमें आपकी चॉइस नहीं है। इसमें तो ये डी पॉइंट को ओरिजिन लेना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, बिकॉज द एग्जामिनर हिमसेल्फ हैज टोल्ड यू टू डू दैट। सिमिलरली यहां पर देखो, इसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि ओरिजिन क्या लेना है, बट लुक एट द फिगर। डू यू सी द वाई एक्सिस एंड डू यू सी द एक्स एक्सिस? तो x और y जब आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली तय हो गया कि इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा ये ही ओरिजिन होना चाहिए। तो कुछ केसेस में आपको ओरिजिन की लोकेशन हिंट के तौर पे या साफ साफ तौर पे बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि इस टी सेक्शन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में आपको ओरिजिन सेलेक्ट करना है।
Now how to do that? That is what I am going to explain you कि intelligent selection of origin कैसे किया जाए. तो मैं ये कह रहा था, always going by the leftmost bottommost rule is not the correct decision at all times. क्यों? हालांकि इस पॉइंट को ओरिजिन सेलेक्ट करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको एक्स बार और वाई बार दोनों के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और दोनों के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी. नाउ इंस्टेड लुक एट द theory that I am telling you, and please remember this. Suppose I do not select the origin as the leftmost and bottommost part. I simply use a logic. भाई अगर एरिया सिमेट्रिकल है किसी एक्सिस के अबाउट, तो मुझे ये पक्का शर्तिया रूप से पता है कि उसका सेंट्रॉइड उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा. जैसे आपने सेमी सर्कल के लिए किया था. मेरे को ये नहीं पता कि इस सेमी सर्कल में कितना ऊपर इसका सेंट्रॉइड आएगा, लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि इस लाइन का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं और इधर से एक वर्टिकल लाइन खींचूं, तो सेंट्रॉइड इस लाइन पर ही कहीं बनेगी. ये तो मेरे को पक्का पता है. ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. इस लाइन के इस तरफ का एरिया और इस लाइन के इस तरफ का एरिया बिल्कुल मिरर इमेज है. सो ऑलवेज लुक फॉर मिरर इमेजेस इन द गिवन प्रॉब्लम. ये एक टी सेक्शन है. आप इसमें मिरर इमेज कहां पर पा सकते हैं? अगर मैं इस टी सेक्शन के बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस बना दूं, जो कैसे मिलेगा? इस बॉटम वाले या टॉप वाले पॉइंट का मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लो और उसको कनेक्ट कर दो दिस एक्सिस. सो कैन आई बी 100% श्योर कि इस इमेज का जो सेंट्रॉइड है ओवरऑल टी सेक्शन का, वो इस लाइन पर ही कहीं पर मुझे मिलेगा. ये नहीं पता कि कितना ऊपर मिलेगा, लेकिन मिलेगा इस लाइन पर ही. क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू वाले दोनों जो एरियाज हैं वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की. So this is the kind of intelligence that you have to use. If you get a perfectly symmetrical figure, then always select the axis in such a way so that at least one of the axis becomes the axis of symmetry. तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? मैं इस टी सेक्शन का ओरिजिन यहाँ पर नहीं लूंगा, तो मैं कहाँ पे लूंगा? It is better to select the origin of the T section here. कैसे? ये पॉइंट कैसे बना ओरिजिन? इसका लॉजिक ये है कि इस पॉइंट से आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, तो ओरिजिन यही होगा. अब ये अगर वाई एक्सिस बन गया आपका, तो सीधी सी बात है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया. नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग दिस point as the origin, now you go on and find x bar and y bar, and now let me tell you the value of x bar is 0. इसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी आपको. क्यों 0 हो गया? क्योंकि आपका सेंट्रॉइड इस लाइन पर ही अगर लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे हर जगह पे x की वैल्यू 0 है, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन. ये फायदा हो गया अपने को. तो बाय सिंपली सेलेक्टिंग intelligently an axis of the centroid, you automatically eliminate the need to find or compute the value of x bar. ये फायदा हुआ आपको. तो ये चीज ध्यान रखना, इससे आपके एग्जाम में हो सकता है आपकी मेहनत आधी हो जाए. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूं. हो सकता है कि अपनी दूसरी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने का अपने को टाइम ना मिले, but with the hint that I am going to give you, I am pretty much sure that all of you will easily solve all the questions given in the problem sheet. अपने जो आप ये जो sheet है इसमें आपकी सारी problem solve हो जाएगी. Suppose I have an area like this, and instead of adding additional areas to this rectangle, what I have done is I have taken away quarter of the rectangle by cutting it out. Okay. इसमें से ये एरिया काट लिया है. सो आई हैव ओनली दिस मच ओवरऑल एरिया. नाउ समबडी माइट आर्ग्यू कि ये तो एल सेक्शन बन गया. यस, यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एन एल सेक्शन मेथड आल्सो, जैसा अपन ने अभी सॉल्व किया. और यू कुड कंसिडर दिस एज अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग एरिया. इन दैट केस A1
becomes the complete rectangular area. A2 becomes the small missing part. This is the complete area, and A2 is the small missing part. Now the only thing is, since there is only air here, इस जगह पे कोई एक्चुअल एरिया है ही नहीं, तो एरिया A2 को नेगेटिव ले लेना है, बस इतना सा काम याद रखो. एंड नाउ यू सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट योर x bar will be A1 which is the complete area even including the piece that is supposed to be missing. ठीक है, A1 को आप पूरा रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हो into x1 स्टार, यानी कि इसको भी इंक्लूड करते हुए इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा उसका x1 स्टार plus A2 into x2 star, same formula. Please see, it is the same formula, nothing is different. A1 plus A2. अब बस इसमें करना ये है कि ये जो फॉर्मूला आपका बना है, इस फॉर्मूले में A2 की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव रख दो. Why are we putting it as negative? Because this is a missing area. So if you get a problem of missing areas, you apply the same strategy, but the only difference with A2 put as negative. तो इस प्लस को हटा करके माइनस लिखो, इस प्लस को हटा करके माइनस लिखो, बस इतना सा चेंज है आपका. And now if we proceed to solve this, सर हाँ ऊपर वाले एरिया में आपने बताया, हाँ बोलो बोलो. सर इस ऊपर वाले एरिया में आपने पहले बोला था कि A1 का तो निकालना ही है, ये जो आपने A1 लिया ये तो पूरा ही एरिया ले लिया, तो फिर हाँ. इसमें x1 स्टार जो है वो तो हाँ. अपन को निकालना ही है. वो आपके पूरे एरिया का आएगा. सर वो तो निकालना ही है, फिर वो अपन इसमें कैसे ले सकते हैं A1 के साथ? क्यों, A1 के साथ ही तो आएगा भाई. आपका A1 जो है पूरा एरिया है, ये देखो A1 को अभी मैंने काटा नहीं है, दिस इज द कंप्लीट एरिया. लेट अस से आई टेक दिस एज द ओरिजिन, तो इसका x1 स्टार कहाँ आएगा, ये आएगा, हाँ ये y1 स्टार आएगा. तो ये वैल्यूज तो आपको मिल जाएगी ना इसके इंडिविजुअल एरिया की सेंट्रॉइड की. अब उसके बाद आप सेकेंड एरिया जब लोगे तो वो यहाँ बैठा है, ये ओरिजिन है, तो सेकेंड हाँ एरिया सर. का सेंट्रॉइड यहाँ आएगा, तो x2 स्टार जो होगा वो ये होगा और y2 स्टार ये होगा. दिस विल बी x2 स्टार एंड दिस विल बी y2 स्टार. इसमें क्या दिक्कत है, हो गया क्लियर? हाँ ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में मैं आपको सिर्फ हिंट दे करके छोड़ देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है. कैन यू सी 3 areas already demarcated? 1, यस सर. 2 and 3. And which is the missing area? सेकेंड वन. Second one is the missing area. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करने का है. This is the triangle and this is the place from where the semicircle is missing. Area number 1, area number 2, area number 3. ठीक है, एरिया नंबर 1 ओरिजिन यहाँ पर है, एरिया नंबर 1 का सेंट्रॉइड पता करेंगे, which will be this. This will be x1 star and this will be y1 star. And similarly for area number 2 you will find the centroid which will be at a height, this will be at this location. एक तो सेमी सर्कल के एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएंगे. अब इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको, और ये कितनी हाइट पर होता है ये, दिस इज एट अ हाइट ऑफ 4r/3π. सो r इज दिस डिस्टेंस, ये है इसका रेडियस सेमी सर्कल का, तो 4r/3π करके आपको लोकेशन मिल जाएगी. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि सेमी सर्कल एरिया नंबर 2 था, x2 स्टार की लोकेशन बताओ मेरे को। लुक एट द फिगर एंड एनीबडी ट्राई टू गेस द वैल्यू ऑफ x2 स्टार विदाउट टचिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर टच नहीं करना है और सिंपल मेंटल लॉजिक से मेरे को x2 स्टार की वैल्यू बताओ। एनीबडी? ये अगर बता दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका मतलब सर 200 कितना है बताओ। ये 200 प्लीज प्लीज सी, दिस इज द ओरिजिन। Sir, सर 200 120 mm। mm. 200 mm is the correct answer. And those who were not able to do this, कि भाई ये डायरेक्टली कैसे निकाला, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड आएगा यहाँ कहीं पे। ये देखो, ये जो रेड डॉट है यहाँ कहीं सेंट्रॉइड आएगा। आपसे x2 स्टार पूछा गया है। x2 स्टार का मतलब द x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दैट मींस इफ यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू दिस सेंट्रॉइड, दिस डिस्टेंस इज x2 स्टार। ये है x2 स्टार। तो इसमें 4r/3π वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। हाँ, अगर मैं ये पूछूं कि y2 स्टार कितना है, तो इसमें लगेगा आपका 4r/3π वाला फॉर्मूला। दिस विल बी 4 इंटू रेडियस कितना है सेमी सर्कल का। अगर डायमीटर 100 mm दे रखा है तो रेडियस 50 mm हो गया, तो 4 इंटू r, द रेडियस इज 50 mm अपॉन 3π। ऐसा क्यों? क्योंकि अब की बार आपसे y2 स्टार पूछा गया है। y2 स्टार इज द हाइट ऑफ योर सेंट्रॉइड ऑफ द सेकेंड एरिया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कितना ऊपर है एक्स एक्सिस, ये पूछा गया। और ये जैसा आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला 4r/3π से मिलेगा। So this is what you have to understand. So proceeding in this way, what can you say about the triangular area? अब ट्रायंगुलर एरिया के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। What I want you to tell me is the location of x3 star. x3 स्टार बताओ मुझे कितना है, कैसे पता लगेगा? One idea that I know is that if I have a right angle triangle, तो इसका सेंट्रॉइड एक ऐसी जगह पे होता है कि अगर इसके इस लेग की वैल्यू b दे रखी है और इस लेग की वैल्यू h दे रखी है, तो ये, और इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो ये यहां से और यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी? इफ दिस इज द सेंट्रॉइड, देन दिस विल बी b/3 and this height will be h/3. Now use this logic to find x3 star of the triangular area. देखो राइट एंगल यहां पर बन रहा है, ठीक है? तो इसका सेंट्रॉइड एक ऐसी पॉइंट पे होगा जो कि इधर से और इधर से अपनी अपनी हाइट निकालेगा। लगाओ, आप अपना लॉजिक लगाओ एंड टेल मी। सर 83.33। ओके, कैसे निकाला ये भी बताओ। सर सी व्हाट इज 250 का 250 का थर्ड कर दिया ना, 1/3 पार्ट कर दिया 250 का। ये देखो 250, ये पूरी लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ 250 है। और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ 250। तो अगर ये 1/3 ऑफ 250 है तो ओरिजिन से कितना दूर होगा? ये कितना है? ये दैट विल बी 2/3 of 2/3 of 250. So the correct value of x3 star is 2/3 of 250. This is the correct answer. अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये जो भी डेसिमल में आता है, this is going to be the true value. Now using the same logic, how can you find the value of y3 star? थर्ड एरिया के
सेंट्रॉइड की वाई लोकेशन कैसे पता करेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो इसके लिए लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल द ड्राइंग्स हियर। सेंट्रॉइड यहां पर है, ये हाइट कितनी है? आई वांट टू फाइंड आउट ओनली दिस मच हाइट। ये हाइट जो है वो इस हाइट का 1/3 है, और ये हाइट कितनी है? दिस टोटल लेंथ इज 150, दिस इज 100, सो 150 माइनस 100, दिस हाइट इज 50। ठीक है, और 50 का मैं 1/3 करूं तो मुझे क्या मिला? ये हाइट मिली, दिस इज 1/3 ऑफ 50। बट व्हाट आई वांट इज दिस डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से इस सेंट्रॉइड की पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 1/3 ऑफ 50 तो इतना हो गया, और उसमें ये नीचे की लेंथ और ऐड कर दूंगा। ये लेंथ कितनी है? 100, so I will simply add 100 to it. This is how you find x3. Sorry, this is not x3 star, this is y3 star. ये y3 star है, x3 star तो अपन ने पहले पता कर लिया था। This is y3 star. ये समझ में आया क्या आपको y3 star कैसे पता किया है? y3 star is simply the y distance from x axis of your centroid. मेरे को बस ये हाइट चाहिए, किसी भी तरीके से ले आओ। तो आपने क्या किया, इधर से इधर तक तो पता है 100 है, फिर यहां से लेके यहां तक का ही तो पता करना था, और ये पता है कि वो इस टोटल लेंथ का 1/3 होगा, इस लेंथ का 1/3 होगा, और ये लेंथ 50 है, तो 50 की 1/3 को 100 में ऐड कर दिया। दिस इज द लॉजिक ऑफ गोइंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। So if this is clear to you, now all you have to do is apply this formula. X bar will be A1 X1 star, and please let me correct it, minus A2 X2 star plus A3 X3 star. ये क्यों किया माइनस A2 X2 स्टार? क्योंकि ये मिसिंग एरिया है। And bottom the denominator will be A1 plus A2 plus A1 minus A2 plus A3। चूंकि आपका एरिया 2 मिसिंग है, तो इस A2 को नेगेटिव लेना है, तो आपका जो सेम समेशन फॉर्मूला लगाया है A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3, और उसको लगाने के बाद A2 पे माइनस साइन लगाऊंगा, तो ये मिलेगा आपको, as can be seen on the screen. And similarly your y bar becomes A1 y1 star minus A2 y2 star plus A3 y3 star whole divided by A1 minus A2 plus A3। अब इसमें आपको y1 स्टार y2 स्टार y3 स्टार x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार A1 A2 A3 ये सब इंडिविजुअली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया। ये y3 निकाला, x3 निकाला, उसी तरीके से x2 स्टार y2 स्टार सारे निकाले। x1 स्टार y1 स्टार तो सबसे आसान है, रेक्टेंगल का सेंटर लेना है बस। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज एंटिटीज यू पुट इट इनटू द फॉर्मूला as constructed here and see whether your answer matches with this or not. ये आंसर करेक्ट है, मैंने चेक किया है, तो आप लोग एक बार इसको करके चेक करें। ये क्वेश्चन पूरा करना है सबको, नहीं होता आपस में डिस्कस करें या मेरे से फोन करके पूछें। आई विल क्लैरिफाई इट टू यू एनी टाइम, यू कैन कॉल बिफोर 8 PM एट नाइट। ठीक है, 8 बजे से पहले कभी भी रात में फोन कर लो, आई विल बी अवेलेबल टू यू। उसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। टेक पॉइंट डी एज द ओरिजिन, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, ये तो आसान है, अगर आपने ये कर लिया तो फिर ये तो बच्चों का खेल है, इसमें ये मिसिंग एरिया है। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड लेट मी कलेक्ट द अटेंडेंस। प्लीज डोंट गो अवे। 48 people are shown as present.